Hello students, welcome back to the English class. Today I'll continue the explanation of the lesson Albert Einstein at School by Patrick Pringle. You know that the lesson begins with a clash between Einstein and his history teacher in the classroom at school. The history teacher asked him about the Battle of Waterloo. He asked him in which year the Prussians defeated the French at Waterloo. Albert Einstein replied that he did not know. The teacher asked him whether he tried to learn or not. Einstein frankly, honestly told him that he did not try to learn because he did not see any point in learning facts, as one could always look them up in books. The teacher understood it as Einstein was not interested in education at all. So Einstein clarified that he did that learning facts was no education. It's not facts that matter, but ideas. By example, he tried to explain that he did not see any point in learning dates of battles or which army killed more men, but he was more interested in learning why the soldiers were killing each other. He wanted to know the reason why they were killing, why they were fighting with each other. He was not interested in knowing the dates of battles or which side killed more men or how many soldiers are killed. These are facts. He was not interested in facts. He wanted to know the ideas. He wanted to know why they were fighting with each other. Listening to this answer, the history teacher became angry and he scolded Einstein. And he even called him a disgrace and suggested him to ask his father to take him away from school. Today we'll read from here. Albert felt miserable when he left school that afternoon. So, that afternoon on which this incident took place, Albert Einstein felt miserable. Miserable means unhappy. He felt unhappy that day. Not that it had been a bad day. Most days were bad now. So the reason was not that it was a bad day. He had a clash with his history teacher in the school. It was not the reason. Most of the days were bad anyway. But because he had to go back to the hateful place the next morning. What was the reason for feeling miserable? The reason was not that he had a bad day, but the reason was that he had to go back to that hateful place where he lived. He did not like that place. Okay, तो उस दिन जिस दिन का ये वाक़या है हिस्ट्री टीचर के साथ, उस दिन आफ्टरनून में जो है जब वो स्कूल से निकला तो आइंस्टाइन बहुत मिजरेबल फील कर रहा था। इसलिए नहीं कि उस दिन उसका दिन बहुत ख़राब गुजरा था, क्योंकि उन दिनों जो है उसके सारे दिन ख़राब ही गुजर रहे थे। उसकी वजह जो थी उसके मिजरेबल होने की वो ये थी कि अगले दिन सुबह उसे उसी हेटफुल प्लेस पे जाना था जहाँ पे वो रह रहा था, क्योंकि जहाँ पे वो रह रहा था वो अच्छी जगह नहीं थी और काफ़ी गंदी थी और इसीलिए उस जगह को वो हेटफुल कहता। He only wished his father would take him away, but there was no point in even asking. He only wished that his father would take him away. वो चाहता था कि उसके फादर वहाँ से उसे ले जाए, but there was no point
in asking him to take him away from there. लेकिन अपने फादर से पूछना भी जो है उसका भी कुछ फ़ायदा नहीं था. क्यों कोई फ़ायदा नहीं था? He knew that, he knew what the answer would be. उसका फ़ायदा इसलिए नहीं था क्योंकि वो आंसर जानता था कि उसके फादर क्या जवाब देंगे. He would have to stay until he had taken his diploma. So he knew the answer, what his father would say. What was the answer that he expected from his father? The answer would be that his father would tell him to stay back till the completion of his diploma. उसके फादर की ख्वाहिश थी, वो ये चाहते थे कि वो तब तक वो वहाँ रहे स्कूल में जब तक कि वो डिप्लोमा ना कर ले. और अगर आइंस्टाइन अपने फादर को कहता भी कि वो उसे स्कूल से निकाल लें तो उसके फादर का यही जवाब होता. सो देयर वाज नो पॉइंट इन आस्किंग हिज फादर टू टेक हिम अवे फ्रॉम स्कूल. गोइंग बैक टू हिज लॉजिंग्स डिड नॉट चीयर हिम अप. लॉजिंग मीन्स अ रेंटेड प्लेस इन अ हाउस. कुछ लोग अपने घरों में कुछ हिस्सा किराए पे दे देते हैं, उसको लॉजिंग कहते हैं, या टेम्पररी अकोमोडेशन यू कैन से. गोइंग बैक टू हिज लॉजिंग्स डिड नॉट चीयर हिम अप. तो उसे अपने लॉजिंग वापस जाना था जहाँ पे वो रह रहा था. वो एक जगह किराए पे रह रहा था. ही वॉज लिविंग इन अ रेंटेड रूम इन अ हाउस. So he did not like going back there. He did not feel cheerful. He did not feel happy to go back to that hateful place. His father had so little money to spare that Albert had been found a room in one of the poorest quarters of Munich. You know that Einstein was living in Munich, and his father, his parents were living in Milan, Italy. But his father did not have enough money to afford a good accommodation for him in a good place. उसके फादर के पास इतना पैसा नहीं था कि वो किसी अच्छी जगह पर कोई अच्छे घर में उसको रूम दिला सकते हैं. इसीलिए वो म्यूनिक के जो सबसे पुअरेस्ट क्वार्टर्स थे, पुअरेस्ट क्वार्टर में पुअरेस्ट एरिया, तो पुअरेस्ट एरिया, तो म्यूनिक के सबसे पुअरेस्ट एरियाज में उसको एक रूम मिला. हिज फादर हैड सो लिटिल मनी टू स्पेयर. इट मीन्स दैट हिज फादर डिड नॉट हैव एनफ मनी टू स्पेंड. दैट अल्बर्ट हैड बीन फाउंड अ रूम इन वन ऑफ द पुअरेस्ट क्वार्टर्स ऑफ म्यूनिक. हिज फादर वॉज पुअर, दैट्स वाई Albert found a room in the poorest areas of Munich. He did not mind the bad food and lack of comfort. Albert did not get good food to eat, or he did not live very comfortably. The place where he lived was uncomfortable. He did not enjoy living there. It was not a comfortable place to live, and the food was bad, but he did not mind it. उसे बुरा नहीं लगता था जो उसको खाना ख़राब मिलता था या वो रहने की जगह कंफर्टेबल नहीं थे, वो इसको बुरा नहीं मानता था. He did not mind it. और even the dirt and squalor, वहाँ पे जो गंदगी थी, स्क्वालर मीन्स गंदगी, डर्ट मीन्स गंदगी, स्क्वालर मीन्स ऑल्सो गंदगी. तो जो वो जगह थी वो काफ़ी गंदी थी, उसे भी बुरा नहीं मानता था वो. द प्लेस वॉज डर्टी एंड देर वॉज नो कम्फर्ट. द फूड वॉज बैड. अल्बर्ट डिड नॉट माइंड any of these things, but he hated the atmosphere of slum violence. What he did not like was that the slum violence, there was a lot of violence. So he lived in a slum actually. It was a dirty area where he lived, or the most backward areas where people live in small houses, huts.
Such kind of area is called slum. So, and sometimes people fight. They use bad words, they use abusive language. Uh, uh, so, Albert did not like the atmosphere of violence in the slum where he lived. So people used to fight there. His landlady beat her children regularly. So the landlady of Einstein used to beat her children regularly on a daily basis. उसकी जो लैंडलेडी थी वो अपने बच्चों को मारा करती थी, पिटाई लगाती थी. And every Saturday her husband came drunk and beat her. और उसका हस्बैंड जो है वो हर सैटरडे को आता था और वो अपनी वाइफ को मारता था, उसकी लैंडलेडी को. ओके, तो हर हस्बैंड वॉज अ ड्रंकर्ड एंड he used to live somewhere outside, but he visited his house weekly on Saturday. And whenever he came, he was drunk and beat his wife. So the Einstein's landlady beat her children regularly, and her husband, when he came on Saturday, beat the landlady. So we can say that there was an atmosphere of violence in the slum where he lived. But at least you have a room of your own, which is more than I can say, said Yuri when he called round in the evening. Call round means to go to someone's place to meet. किसी के घर पे जा कर के मिलने को कॉल राउंड कहते हैं. तो उस दिन शाम को जब यूरी उससे मिलने के लिए आया तो उनसे ये बात हो रही थी. यूरी और आइंस्टाइन के बीच में बातचीत हो रही थी. और तो बातचीत में यूरी ने बातचीत के दौरान जो है आइंस्टाइन ने जो है वहाँ जिस जगह पे वो रह रहा था उस जगह के बारे में यूरी से शिकायत की. तो ये वो शिकायत सुनने के बाद यूरी ने ये उसको कहा कि एटलीस्ट यू हैव अ रूम ऑफ योर ओन. उसको कहा कि कम से कम तुम्हारे पास अपना एक रहने के लिए रूम तो है तुम्हारे पास, विच इज़ मोर देन आई कैन से. मतलब कि ये आपके लिए काफ़ी आपकी ज़रूरत से के मुताबिक ठीक ही है. ओके, सो ही वांटेड टू satisfy Einstein by telling him that at least he has got a room of his own where he can live alone. So it was more than sufficient for him. At least you live among civilized human beings, even if they are all poor students, said Albert. तो यूरी ने जब ये बात कही कि कम से कम तुम्हारे पास एक रूम है रहने के लिए जो कि तुम्हारे लिए काफ़ी है, तो आइंस्टाइन ने कहा कि यूरी को कहा आइंस्टाइन ने, यूरी उसका एक फ्रेंड है म्यूनिक में जो है जहाँ पे उसका स्कूल था, वहाँ पे एक उसका दोस्त है, उसका नाम है यूरी. तो यूरी और अल्बर्ट आइंस्टाइन के बीच में जब बात हो रही थी तो आइंस्टाइन ने जिस जगह पे वो रह रहा है उसके बारे में उसने शिकायत की होगी. तो यूरी ने उसको कहा कि कम से कम तुम्हारे पास अपना एक रूम है रहने के लिए. उस पर आइंस्टाइन ने उसको कहा at least you live among civilized human beings, even if they are all poor students, said Albert. Actually, Yuri used to live in a hostel with students. With that reference, Einstein told him that at least you live among civilized human beings, even if they are all poor students. So Einstein considered those students as civilized, and Yuri was living with those students. ठीक है, क्योंकि यूरी जो है स्टूडेंट्स के साथ रह रहा था, इसलिए आइंस्टाइन ने उसको कहा कि तुम कम से कम एक सिविलाइज लोगों के साथ रह रहे हो. तो जहाँ मैं रहता हूँ यहाँ पे लोग अनसिविलाइज्ड हैं, कम से कम ऐसे तो वो स्टूडेंट्स नहीं हैं. They are not all civilized. Yuri replied, did you not hear that
one of them was killed. I'm sorry. Did you not hear that one of them was killed last week in a duel? तो जूरी ने ये जवाब दिया कि सारे के सारे लोग जो हैं सिविलाइज्ड नहीं हैं, कुछ लोग हैं जो सिविलाइज्ड नहीं भी हैं। फिर जूरी ने उससे पूछा क्या तुमने पिछले हफ्ते जो एक ड्यूल में एक आदमी मारा गया था उसके बारे में तुमने नहीं सुना? तो ड्यूल मीन्स अ फाइट बिटवीन टू पर्सन्स। तो एक फाइट हुई थी जिसमें दो आदमी लड़ रहे थे और उस ड्यूल में एक आदमी मारा गया था। तो जूरी ने कहा कि जहाँ मैं रहता हूँ वो सारे के सारे लोग सिविलाइज्ड नहीं हैं। अभी पिछले ही हफ्ते एक ड्यूल में एक आदमी मारा गया था, क्या तुमने नहीं सुना? एंड व्हाट हैपेंस टू द वन हु किल्ड हिम? सो Einstein asked jury about the person who killed the other person. He asked him what happened to that person who killed the other person. Nothing, of course. He is even proud of it. Jury told Einstein that nothing happened to that person. And actually, the killer was proud of his act. जो किलर है वो अपने किए पर शर्मिंदा होने के बजाय वो प्राउड है। His only worry is that the authorities have told him not to fight any more duels. तो उसका जो नतीजा है, उसका जो रिजल्ट रहा है उस ड्यूल का जिसमें उसने किसी और आदमी को मारा था, तो उसका रिजल्ट ये रहा था कि जो है अथॉरिटीज़ ने उसके ऊपर बैन लगा दिया था कि वो और ड्यूल्स फाइट नहीं कर सकता। ये ड्यूल्स जो होते हैं ये स्पोर्ट्स की तरह होता है कि दो लोग जो है आपस में लड़ते हैं और जैसे कुश्ती होती है वैसे वो आपस में लड़ते हैं और सारे लोग देख रहे होते हैं। तो लेकिन उस जो किलर था उसके ऊपर अथॉरिटीज़ ने ये रिस्ट्रिक्शन लगा दिया था कि ही वुड नॉट फाइट एनी मोर ड्यूल्स। सो इट वॉज हिज ओनली वरी। सिर्फ यही उसकी परेशानी थी। वो तो अपने किए पर जो है बहुत प्राउड था, लेकिन उसकी परेशानी जो थी सिर्फ इतनी थी कि ही वॉज बैंड फ्रॉम फाइटिंग एनी मोर ड्यूल्स। ही इज अपसेट अबाउट दिस बिकॉज ही हैजंट अ सिंगल स्कार ऑन हिज फेस टू वियर फॉर द रेस्ट ऑफ हिज लाइफ एज अ बैज ऑफ ऑनर। बैज ऑफ ऑनर मीन्स मार्क ऑफ प्राइड, यानी शान का निशान। ठीक है, तो जो आदमी था जिसने दूसरे को मारा था ड्यूल में, वो तो इस वजह से परेशान था कि उसके ऊपर बैन लगा दिया गया था और वो इस वजह से भी अपसेट था कि उसके फेस पे कोई ऐसा निशान नहीं था। देयर वाज नो स्कार, यानी कि कोई ऐसा जो है इंजरी का निशान नहीं था। जो इंजरी, स्कार का मतलब दिस इज़ अ मार्क ऑफ इंजरी। तो उसके चेहरे पे कोई ऐसा मार्क ऑफ इंजरी भी नहीं था, कोई स्कार भी नहीं था जिसको जो उसको एक बैज ऑफ ऑनर की तरह ज़िंदगी भर लिए रहता अपने चेहरे पे कि लोग देखते और वो फ़ख्र महसूस करता, उसको अच्छा लगता कि देखो मेरे चेहरे पे एक निशान है, एक निशानी के तौर पे। ठीक है, तो उसको ये परेशानी थे। सो व्हेन अल्बर्ट आइंस्टाइन told jury that at least he lived among civilized people, jury replied that all of them were not civilized. Then he gave one example to prove that. He told him that last week a man was killed in a duel. Albert asked him what happened to that man. Jury told him that nothing happened to him. And the man was actually proud of his act. He was sorry for being banned by the authorities from fighting any more duels. And he was upset because he did not have any scar on his face. Okay. Ugh! Exclaimed Albert. And these are the students. Ugh is a
is an expression of dislike or disgust. उस उसने कहा, जैसे हम लोग उफ कहते हैं, दिस इज उफ इज एन एक्सप्रेशन ऑफ डिसलाइक. सो अग एक्सक्लेम्ड अल्बर्ट, एंड दीज आर द स्टूडेंट्स. तो अल्बर्ट ने कहा, और ये लोग स्टूडेंट्स हैं. वेल, यू विल बी ए स्टूडेंट वन डे, सेड यूरी. तो Einstein was shocked to learn this, and he asked whether these students who kill each other are students. Then Yuri told him that one day Albert would also become a student. Well, you will be a student one day. Okay. I doubt it, said Albert glumly. Glumly means sadly. तो अल्बर्ट ने कहा कि मुझे शक है इसके बारे में कि मैं कभी स्टूडेंट बन सकूंगा. तो इसको याद रखिए कि यूरी ने उसको कहा कि एक दिन तुम भी स्टूडेंट बनोगे. तो अल्बर्ट ने कहा कि मुझे शक है कि मैं बन पाऊंगा. आई डोंट थिंक आई एवर पास द एग्ज़ाम्स फॉर द स्कूल डिप्लोमा. तो अल्बर्ट ने कहा कि मुझे नहीं लगता कि मैं स्कूल डिप्लोमा का एग्ज़ाम पास कर पाऊंगा. ओके. तो इट मीन्स दैट Albert Einstein was doing school diploma, so he was not called a student. During those days, maybe it was a system that a person who was doing school diploma was not called a student. Okay. And Albert had doubt whether he would be able to pass the school diploma or not. Okay. He told his cousin Elsa the same next time she came to Munich. तो अगली बार उसकी एक कज़िन थी, वो जब म्यूनिक आई थी तो उसको भी अल्बर्ट ने यही बात बताई थी. तो ये यहाँ पे एक बातचीत है. देयर इज अ कन्वर्सेशन हियर बिटवीन आइंस्टाइन एंड हिज कज़िन Elsa when she came to Munich. Normally she lived in Berlin where her father had a business. तो बर्लिन भी जो है एक जर्मनी का एक शहर है बर्लिन, और म्यूनिक के दूसरा शहर है जहाँ अल्बर्ट रहता है. और Elsa lived in Berlin and she came to Munich and met Albert Einstein. I am sure you could learn enough to pass the exams, Albert, if you tried, she said. तो एल्जा ने उसको कहा कि I am sure you could learn enough to pass the exams if you tried. एल्जा ने अल्बर्ट को कहा. उनके बीच में भी यही बात हो रही थी कि अल्बर्ट एग्ज़ाम जो है क्वालिफाई कर पाएगा या नहीं. तो उसको समझाते हुए एल्जा ने कहा कि अगर तुम चाहो, इफ़ यू ट्राई, यू कुड लर्न इनफ टू पास द एग्ज़ाम. तो अगर तुम चाहो तो तुम इतना लर्न कर सकते हो कि एग्ज़ाम पास कर लो. शी सेड, आई नो लॉट्स ऑफ बॉयज़ हु आर मच मोर स्टूपिड देन यू आर, हु गेट थ्रू मीन्स पास करना. तो एल्जा ने उसको बताया कि वो बहुत से ऐसे स्टूडेंट्स को जानती है, ऐसे बॉयज़ को जानती है जो अल्बर्ट से ज़्यादा स्टूपिड हैं और वो उन्होंने पास कर दिया है. वो गेट थ्रू, और जो पास कर जाते हैं. ठीक है. दे से यू डोंट हैव टू नो एनीथिंग. और वो लड़के ये बताते हैं कि आपको कुछ जानने की ज़रूरत है. यू डोंट हैव टू नो एनीथिंग. नो मीन्स अंडरस्टैंड एनीथिंग. आपको कुछ जानने की या समझने की ज़रूरत नहीं है. यू डोंट हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट यू आर टॉट. आपको जो कुछ पढ़ाया जाता है उसको कुछ समझने की ज़रूरत नहीं है आपको. यू डोंट हैव टू अंडरस्टैंड, यू डोंट हैव टू लर्न व्हाट इज़ टॉट एट स्कूल. जस्ट बी एबल टू रिपीट इट इन द एग्ज़ाम्स. तो आपको सिर्फ इतना करने की ज़रूरत है कि आपको जो पढ़ाया जाता है उसको एग्ज़ाम में आप रिपीट करते हैं, एग्ज़ाम में लिख कर चले आए, वेदर यू नो इट
you understand it or not. You should be able to repeat it, to write it in the examination, what is taught in the school. Okay, so this is what Elsa suggested Einstein. She told him that if he tried, he could easily pass the examination. Hmm. He could learn enough to pass the examination because she knew some other boys who pass the examination, who go through, and they tell her that it is easy to pass the examination. No need to learn, no need to know anything that is taught at the school. What you have to do is to just repeat it in the examination. That's the whole trouble, said Albert. I am no good at learning things by heart. So what Elsa was suggesting Albert was to learn by heart, rote learning. वो उसको ये कह रहे थे एल्जा कि आपको समझने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि आप सिर्फ उसको मेमोराइज कर लो. शी सजेस्टेड हर टू मेमोराइज द थिंग दैट आर टॉट इन द स्कूल. वो सिर्फ रटने की बात कह रहे थे कि आपको समझने की ज़रूरत नहीं, आप बस रट लो और एग्ज़ाम में लिख तो आप पास हो जाओगे. तो आइंस्टाइन ने उसको कहा कि यही तो प्रॉब्लम है, दिस इज़ द ट्रबल. ओके, और उसने कहा कि आई एम नो गुड एट लर्निंग थिंग्स बाय हार्ट. मैं बाय हार्ट याद करने में अच्छा नहीं हूँ. यानी अल्बर्ट टोल्ड एल्जा दैट ही वाज नॉट गुड एट मेमोराइजिंग थिंग्स, at learning things by rote. You don't need to be good at it. Anyone can learn like a parrot. तो एल्जा ने उसको कहा कि आपको इसमें बहुत अच्छा होने की ज़रूरत नहीं है. पैरट की तरह तो कोई भी लर्न कर सकता है. You just don't try. And yet I always see you with a book under your arm. Added एल्जा. तो एल्जा ने कहा बस तुम ट्राई नहीं करते हो, इसमें कुछ अच्छा होने की ज़रूरत नहीं है. यू डोंट नीड टू बी गुड एट लर्निंग बाई रोट. यू जस्ट हैव टू लर्न इट बाई लाइक अ पैरट. एनी वन कैन डू इट. इट्स सो ईजी. बट ही डज नॉट ट्राई. एंड येट आई ऑलवेज सी यू विद अ बुक अंडर योर आर्म. तो वो कहती है कि तुम बस ट्राई नहीं करते हो, और फिर भी मैं देखती हूँ कि तुम हमेशा एक बुक जो है अपने आर्म के नीचे दबाए रखते हो. what is the one you are reading? ये तुम कौन से बुक पढ़ रहे हो? एल्जा ने अल्बर्ट को पूछा. अ बुक ऑन जियोलॉजी. जियोलॉजी, रॉक्स एंड थिंग्स, डू यू लर्न दैट? तो अल्बर्ट उसको बताता है कि वो जो बुक लिए हुए है वो जियोलॉजी के ऊपर एक बुक है. तो इससे एल्जा को बहुत हैरत हुई. उसने कहा जियोलॉजी, रॉक्स एंड थिंग्स. जियोलॉजी इज द स्टडी ऑफ रॉक्स एक्चुअली. तो डू यू लर्न दैट? उसने उसको पूछा कि क्या तुम वो ये पढ़ते हो? बहुत वो काफ़ी सरप्राइज्ड हुई. नो, वी हैव हार्डली एनी साइंस एट स्कूल. तो अल्बर्ट रिप्लाइड दैट साइंस इज नॉट टॉट एट स्कूल, सो इट वॉज नॉट अ पार्ट ऑफ द सिलेबस. देन वाई आर यू स्टडिंग इट? एल्जा ने कहा तो फिर तुम ये क्यों पढ़ रहे हो? व्हेन इट इज़ नॉट prescribed in your syllabus, when it is not a part of your syllabus, when it is not taught in school, then why are you studying it? Because I like it. Isn't that a good enough reason? तो उसने बताया कि मैं इससे पसंद करता हूँ जियोलॉजी. And he asked Elsa whether it was not a good enough reason to study. Elsa sighed. Sighed का मतलब गहरी सांस लेना. तो एल्जा ने गहरी सांस ली. यू आर राइट ऑफ कोर्स अल्बर्ट, शी सेड, बट इट वॉन्ट हेल्प यू विद योर डिप्लोमा. तो एल्जा ने उसको कहा कि आप बिल्कुल ठीक कहते हो कि अगर आप इसको लाइक करते हो तो आप पढ़ो, लेकिन इससे आपको डिप्लोमा हासिल करने में मदद नहीं मिलेगी. तो एल्जा was surprised that Einstein was reading a book on geology, but she told him that if he liked to read that book, it was okay, but it would not help him in passing the exam
of diploma. Okay, so my dear student, today up to here only. We'll continue tomorrow. Thank you very much.